हाय व्यूअर्स, आज मैं DWLPUP का आने वाला रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अभी जो DWLPUP का रिक्रूटमेंट चल रहा है वो तो रिसेंटली उसका वेरिफिकेशन लिस्ट आने का बहुत चांस है और उसके बाद एक एक करके मेरिट लिस्ट आएगा और डेट का कट ऑफ में आ जाएगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो लोग टेंशन करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि DWLPUP का रिक्रूटमेंट फिर से DWLPUP का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। कोई कैंडिडेट का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल आराम से अप्लाई करके मिल सकता है। तो उसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। और रिसेंटली EM सर ने भी वही कहा। अभी देखिए, EM सर का क्लिप में वीडियो में दे रहा हूँ, आप देखिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ওলাব আৰু একেটা সময়তে নতুন বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পাব, মানে প্যারালালি। আৰু আমি সময়সীমাটো এনেকৈ কৰি দিম যে যিসকল যদি কোনো মেৰিট লিষ্টত এখন তালিকাত তেওঁলোক নিৰ্বাচিত নহয়, ইমিডিয়েটলি যাতে তেওঁলোকে দ্বিতীয়টো বিজ্ঞাপনৰ এগেইনষ্টে আবেদন কৰিব পাৰে। কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে, টেট পাছ কৰি থৈছে আৰু তেওঁলোকে DLED পাছ কৰি থৈছে। মোলৈ বহুত মেছেজ আহি আছে, ছাৰ দুদিনৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অৰ্থাৎ যিদিনা লাষ্ট ডেট আছিলে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ, তাৰ দুদিন পাছত তেখেতৰ CTETৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে। গতিকে তেওঁ আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে পৰ্টেলটো আকৌ খুলি দিয়ক। মই পৰ্টেলটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে যিসকলে অলৰেডি আবেদন কৰি থৈছে, মই পৰ্টেল খুলি দিলে তেওঁলোক হাইকোৰ্টত গুচি যাব। এতেকে যিসকলে দুদিন পাছত বা লাষ্ট ডেটৰ পাছত যিসকলে টেট পাছ কৰিছে, তেওঁলোকে এই আমাৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিজ্ঞাপনত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব।